Very good morning to all of you guys. Yes, how are you all? So I hope you guys are doing well in trading and in life. Yes, so welcome back. And into this video, we will be discussing about Nifty and Bank Nifty as always. And this is the first video of this week. और आप सभी से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि पहली वीडियो आपको नहीं मिल पाई बिजी होने की वजह से बट आई मेक श्योर दैट यू गेट द वीडियोस वेरी रेगुलरली और निफ्टी में हमने देखा बैंक निफ्टी में जो सबसे खूबसूरत चीज हुई कि पिछले 2 दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर आई है तो this point of time at this point of time when I'm recording this video we have a lot of clarity about the market. प्रीवियस वीक इट वाज अ टाइम जब बाजार एकदम एक साइडवेज जोन में था एक दायरे में था नाउ इट हैज ब्रोक द बॉक्स एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अप यस और I'll show you whether this market can continue to move up for next 2-3 days more और यहाँ से हम वापस उसी रेंज में फॉल बैक हो जाएंगे तो देर आर 2-3 थिंग्स विच कैन हैपन इन मार्केट और वो सभी केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So before I go to the एनालिसिस पार्ट आप सभी को हम याद दिलाना चाहेंगे कि कल थर्सडे है हमारा फ्री ट्रेड्स का दिन है तो आप सभी ज्वाइन करना न भूलें. फ्री टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड शेयर होंगी और वो चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. यस तो लिंक से चैनल ज्वाइन करना न भूलें फॉर ऑल द अपडेट्स एंड फ्री ट्रेड्स टुमारो. यस सो लेट्स क्विकली गो बैक हियर. देख सकते हैं ये हमारी ट्रेड शोकेस की लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस शीट है और ट्रेड शोकेस में जून मंथ में नेट 1,26,000 का प्रॉफिट है. तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट मंथ. उसके पहले हमने देखा था मई मंथ की परफॉर्मेंस शीट में 2,63,000 था. So yes, June was a bit challenging month, but we managed it well and closed in a 1.25 lakh rupees of profit. So as a trader, this is how is your trading journey. Yes, trading is all about cumulative profits. हर महीने के प्रॉफिट्स में कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा बट यू कंटिन्यू टू ऐड द प्रॉफिट्स ओवर एन ईयर. you'll see कि हमने 100%, 200%, 300%, depends on your skills and your caliber, you have grown to this much. Getting it? So it is very important that whenever you are trading, think like a long-term business. Yes, it's not just about one trade, one day or a month. No, it's about a business. This is a hardcore business which you are going to do for next 10 years, 20 years, or maybe like I'll be doing it for my life, for the complete lifetime. तो जिंदगी भर के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग में जब लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऐड कर देते हैं तो जो ग्रीडीनेस है और ओवर ट्रेडिंग है आदि आदि चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम से एलिमिनेट हो जाती हैं. ठीक बात है. तो आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं से भी ट्रेड शोकेस ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे 9171116644 पे कॉल करके भी ट्रेड शोकेस ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए let's begin the analysis. And when I'm recording this video today is a live day, 7th of July, and this analysis will be valid for 7th, 8th and 9th of July. Yes, for next 3 days. So you can see this is the candle information. This is today's candle. Now, if I remove all the indicators which I have applied here, this is the upper territory. ये जो है इसकी अपर टेरिटरी है और अपर टेरिटरी जो है बैंक निफ्टी की दिस इज अराउंड 35,800 एंड 810. तो लगभग 35,800 से लेके 850 का ये जो है दिस इज योर अपर रेंज, अपर जोन है. And so far, your lower range of the sideways market is this low, 34,632. So if I tell you that, okay, this week we are, I mean, Nifty Bank is so far trading in this range of 34,600 to 35,850, it is all right. क्योंकि निफ्टी बैंक इसी रेंज में ट्रेड कर रही है. Now the next course of move will come once Nifty Bank crosses 35,810 decisively. So here
for Nifty Bank to move up from here, we need a decisive breakout. एक निर्णायक breakout आना चाहिए कहाँ पे, above 35,810, और इस जोन के ऊपर जाके जब निफ्टी बैंक सर्वाइव करेगी, then we can expect the further upside. I tell you the further upside value, but this is your 34,800 to 850 zone, which needs to get broke for further upside. I can call it more upside. समझ में आई बात? I hope you all are clear till this point. Yes, just type in the comment box, yes, I'm clear. Yes. तो अब यहाँ पे हम इसके ऊपर जाएंगे, और अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो कितने ऊपर जा सकते हैं? Let me draw a fib retracement to get that value. Yes, this is your zone. This was the key resistance area. So once this is broken, we can move towards 36,400 to 450. यानी 800 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके ऊपर 600 से 800 पॉइंट की मूव हमको निफ्टी बैंक में फिर से मिल सकती है। और मेरा मानना है अपार्ट फ्रॉम द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम वापस इन हाइस को जाके टेस्ट करेंगे। तो अगर 35,800 850 जोन्स डिसाइसिवली ब्रेक होते हैं तो फिर हम 37,000 के लिए विल गेट रेडी। ठीक है? Yes, clear so far, all of you guys? Fine, fantastic. Now, अब निफ्टी बैंक की एक केस ये हो गया। लेट्स गो बैक टू द निफ्टी so that we can see निफ्टी as well. निफ्टी में हमने कल देखा ऐसे डोजी टाइप की कैंडल बनी, और आज निफ्टी में ऊपर की यात्रा शुरू है। तो मेरे हिसाब से आज का जो दिन है, particularly those who are trading today, can keep this advice of mine into mind. Yes, especially for those who are trading today, can use निफ्टी इंस्टेड ऑफ निफ्टी बैंक। यस, क्योंकि निफ्टी कल परफॉर्म नहीं की थी, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी साइडवेज रहे और निफ्टी परफॉर्म करे। सो especially for Wednesday traders, they can look at Nifty instead of Bank Nifty. It's all about your selections. It's all about decisions that you make into trading, because as a trader, you need to make fast decisions and accurate decisions. Yeah, that will impact your trading business, trading journey, how successful as a trader you can become. So it is very important, extremely important that you make right decision at the right time. अगर हम जिंदगी को भी देखें तो इट्स ऑल अबाउट वी आर लिविंग आवर डिसीजंस। यस, हमने सोचा हमें ट्रेडर बनना है, दैट वाज माय डिसीजन एंड आई एम लिविंग माय डिसीजन। तो हियर इनटू ट्रेडिंग यू नीड टू मेक डिसीजंस। यस, और especially if you look at the Nifty and Nifty Bank for the Wednesday, I feel Nifty can move up because it hasn't moved yet, and maybe Bank Nifty can remain sideways for today. Yes, now let's come back again to the chart here. और next point which I want to make out here is maybe आज हम वेडनेसडे को परफॉर्म ना करें, लेकिन निफ्टी और निफ्टी स्पेशली निफ्टी बैंक फ्राइडे वाले दिन, बिकॉज more number of people will be trying to short it, एक्सपायरी गेम चालू होगा, तो कल का दिन यानी थर्सडे का दिन हो सकता है ट्रेंडिंग रहे और बाजार एक बड़ी मूव यहाँ से फ्राइडे को दिखाए, फिर थर्सडे को दिखाए एक्सपायरी वाले दिन, और फ्राइडे को फर्स्ट हाफ बुलिश रह के हम सेकेंड हाफ में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखें, लोग अपना प्रॉफिट बुक करके और ओवरनाइट वीकेंड्स पे पोजीशन कैरी ना करें। तो इस तरीके से अभी तक का स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का लग रहा है। आई थिंक द मेजर मूव शुड कम टुमारो ऑन द एक्सपायरी डेट, बट कीप ऑन वॉचिंग दीज थिंग्स। यस, नॉट एग्जैक्टली मार्केट शुड फॉलो आवर view, but what I can do here is that I have shared the levels with you. Yes, I've shared the important levels with you. I have shared the strategy that okay, if this is breached you can buy, अगर यहाँ से नहीं होता तो साइडवेज होगा तो कल निकलेगा। फ्राइडे के दिन आपको बिल्कुल बुलिश नहीं रहना, फर्स्ट हाफ में लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कीजिए, सेकेंड हाफ में बाजार में करेक्शन आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेडिंग एज पर द instructions or analysis or the thoughts I have shared with you. So guys, I hope you liked the session. Yeah, you liked the analysis, and I would love to hear from you. Yes, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको एनालिसिस कैसी लगी, अपने फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स टू एवरीवन। और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। थैंक यू।